Hello, Assalamualaikum everyone. I hope everybody is doing great. Welcome back to my channel. This is Tessie Nazar. I'm back again with another video. I was really occupied in my work, so I couldn't make a video. So, but I thought today I was receiving so many comments, तो मैंने आप सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं जो एक ऐसा क्वेश्चन है that been asked many times and that been has been answered many times, but still that remains a question that क्यों कैसे किस किस्म के what qualities Pakistan Army is looking in an officer, either at ISSB, either at initial interview, like anywhere when you are applying, either it's Pakistan Army, Pakistan Navy, or Pakistan Air Force. So, what are the qualities they are looking for in an officer? There are plenty of answers to that because मेरे पास एक ऐसे ही questions आता आया था कि now what are the three basic qualities in a candidate they actually see. So in terms of like to answer this particular individual, either it's a male or female, I'm not sure, but still क्योंकि मेरे भाई ने या बहन ने एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. So नंबर वन आई वुड से सबसे पहले ऑनेस्टी. एक ऑफिसर की तरफ आप जब देखते हो तो वो एक जिसे कहते हैं ना ईमानदार सच्चा, जब तक वो एक सिपाही नहीं है कहीं चाहे वो किसी भी फौज का हो, सो आपके अंदर से वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी जब तक वो एक बंदा अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान मुसलमान भी एंड देन हम उसे कहते हैं ऑनेस्ट कितना ईमानदार है कितना सच्चा है. सो ऑनेस्टी इज़ द मेन फैक्टर फॉर बेसिक क्वालिटी विच आई फील should be there and it's the most. Second one is your self confidence, like how much confident you are. आपका confident आप कितने confident हो. Confidence like confidence is the key in terms of like जितने आप अपने आप को अगर आप समझते हो कि मैं वाकई में इस चीज़ के लिए काबिल हूँ या मैं वाकई में अच्छा हूँ तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जिन लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है. दे लैक दैट थिंग इन themselves. Also they cannot convince others. अगर मैं एक लीडर हूँ अगर मैं एक ऑफिसर को हायर करूँ तो ऑफिसर के नीचे अंडर कमांड में देयर वुड बी डिफरेंट इंडिविजुअल विद डिफरेंट सोल्जर. वो अपने सोल्जर्स को किस तरह मनवाएगा जब उसको अपने आप पे ही एतमाद नहीं है, अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं है. So again, self confidence is really important factor in terms of like one of the basic qualities. If I go down, there could be a lot of list. List is very long list. Like this list is there for an army officer के या any officer who is in any of the forces. I'll say determination. कितना वो determined है. Like अगर मैं कहीं हूँ, for example, if I'm in a war, ऐसी situation है, I have to take the decision. तो मेरे अंदर कितनी डिटर्मिनेशन, मेरे अंदर कितनी एक है कि मैं किस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ इसको आगे, या मैं डर डर जाऊँगा या मैं नहीं डिसीजन ले पाऊँगा. सो अगेन आई गेस दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज़ रियली मच डिटर्मिन्ड. ऑल्सो करेजियस. अगेन करेजियस कितना वो उसके अंदर करेज है, कितना चीज़ों को फेस करता है. याद ये नहीं कि पहले सिपाहियों को जाकर दो आने दो, बीइंग ऑफिसर मैं पीछे रहूँगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बीइंग ऑफिसर आई विल बी अहेड ऑफ देम. I will be ahead of my platoon or my soldiers and I will be protecting them, I will be guarding them. They are my responsibility. So they are looking for a person who is courageous. Also hardworking. Again, आप कितने मेहनती हो, कितने आपके लगन शौक से काम करते हो. Again, this is very important factor. Then comes discipline. आप कितना discipline, because when you are a man of your discipline, definitely your soldiers, your people will be looking upon you, and people would be there. अच्छा ये बंदा अच्छा है, डिसिप्लिन से काम करता है, और आप बाकियों को भी डिसिप्लिन में रख सकोगे. That I feel that should be there. Then there are more factors like team player again. आप हर चीज़ में लोगों को साथ लेके चलो, अपने सिपाहियों का भी सोचो, ना कि सिर्फ अपना सोचो, अपने में भी बाकी ऑफिसर्स का भी सोचो, अपने बाकी बीइंग एन आर्मी और एनी सोर्सेज ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी सोचो. So these are few of the factors that are being there. So again, loyalty, courage, integrity. So I feel these are the factors. Starting with first number one, honesty. Second one is self-confidence or confidence. Determination would be the third. Then my list would be the courage, how much courageous you are. Then how much hard worker you are. Then discipline, team player. So these are few of the factors. Then the list goes on. Either it would be like physically fit. They want a person who's physically fit, a person who can direct people. He have that direction. He is very much loyal.
All these are few of the factors, so there could be plenty. But these few factors are really important. If you want to apply in Pakistan Army or if you want KR, I would qualify the initial test or ISSB interview test. So these are the few qualities that they are looking for. I hope that adds value and that adds meaning because that's also from my own experience कि उस टाइम पे what they were looking in a candidate कि कितना आप सच बोलते हो चाहे वो सच कितना भी बुरा या कड़वा क्यों ना हो but you are staying with that you are sticking to the truth also you are being confident आपके अंदर ये नहीं है कि यार मैं नहीं कर सकता there is nothing like that and thirdly determination these are the few factors in the rest they are there, but these I feel they are really, really important and they are must. I hope you like my video. Do watch and subscribe to my rest of the videos. Take care and stay blessed. Doctors.